Hi guys, today I am here for your IELTS 16th November 2019 exam prediction. This is a real exam prediction for your listening, reading and writing exam according to IDP and BC. So please watch this video till end if you want to get the fruitful result from this video, and if you want to get high score, and share this video with your friends who is appearing in upcoming 16th November 2019 IELTS exam. So before starting, if you are the new viewer, then please be sure to subscribe this channel, because only on this channel I am always uploading your listening, reading and speaking predictions and answer keys and your speaking materials. And if you also need any kind of material related with your listening, reading or writing, then please write me down in the comment section. I will definitely help you and provide you. And if you have if you need any kind of suggestion, any idea, please write me down again in the comment section. I will definitely get you back. And now we'll start the prediction. This is prediction belongs to your 16th November 2019 IELTS exam. First is listening. If we talk about listening, section 1 fill-ups will be easy. Section 2 MCQ and map will be easy. And section 3 MCQ or match the information also will be easy. And section 4 fill-ups will be easy. And if we talk about overall, listening will be easy. Easy doesn't mean आप practice करना बंद कर दो. You need to do practice all the different accents like Australian, Canadian और American accent. आप British का भी ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करें. डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस. लिसनिंग डजंट मीन अगर ये इजी हो गया है तो आपको नहीं प्रैक्टिस करना. दिस इज़ द प्रेडिक्शन. ओके, सो प्लीज़ डू योर प्रैक्टिस. एंड लिसनिंग का ओवरऑल आपका इजी होने वाला है. आप अच्छे अगर जितने भी आपके एक्सपेक्टेड बैंड है आपको वो ज़रूर मिलेंगी. सो now moving forward to the reading section. If we talk about reading, then reading को शुरू करने से पहले, if you are the new viewer, then please be sure to subscribe this channel. And now move forward. Passage 1 will be easy, passage 2 will moderate, and passage 3 easy to moderate. Now if we talk about overall रीडिंग सेक्शन विल बी मॉडरेट, बट क्वेश्चन टाइप जो इसकी है वो टफ हो सकती है, मीन्स हार्ड हो सकती है. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर. एंड इफ़ यू नीड माई हेल्प देन प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली गेट यू बैक एंड रिप्लाई यू. एंड रीडिंग जो है टफ है, बट इट डजेंट मीन कि आप उसको नहीं कर सकते. आई बेट यू कैन डू इट वट एवर यू वॉन्ट. सो आप कर सकते हो. आप जितने बैंड सोच के जाओगे आपको ज़रूर मिलेंगे, बट यू नीड टू डू प्रैक्टिस. सो डू प्रैक्टिस as much as you can. And if you need my help, then please write me down. I'm always here to help you. And now moving forward to the writing section. Writing section, if we talk about your task 1, pie, line and bar is very important. And table के बहुत कम chances है, but you need to prepare that also. आप ज़रूर एक बार उसको भी करके जाएं. And if we talk about task 2, before discussing task 2, if you are the new viewer, then please be sure to subscribe this channel, because this motivates me to work even harder for you guys. So please subscribe this channel. And now if we talk about task 2 is related to culture, health, education, employment, population, entertainment and globalization. These topics are very important. आप इनके ऊपर एक बार ज़रूर अपना प्रिपेयर करके जाएं. टिप्स लाइंस जो है अपनी इम्पॉर्टेंट लाइंस को, टॉस लाइंस को ज़रूर एक बार बना के जाएं, क्योंकि इनके ऊपर आपको ज़रूर पूछा जा सकता है. कल्चर, आप कल्चर को ज़रूर पढ़ें. हेल्थ के रिलेटेड जो भी आजकल के डिजीज़ चल रही हैं, जो भी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बारे में आप ज़रूर एक बार देखें. एजुकेशन में आप एक चीज़ ज़रूर करके जाएं, मैन और वुमेन, एजुकेटेड पीपल और अनएजुकेटेड पीपल. ओके, तो उसका आप ज़रूर एक बार एनालाइज करके जाएं. और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस,
एग्री और डिसएग्री वो आप ज़रूर देख के जाएं। मीडिया के जो पॉपुलर सोर्सेज ऑफ मीडिया है उसको आप ज़रूर की पॉइंट्स आप रेडी करके जाएं। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का डाटा भी आपकी टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको इस सब चीज़ों का डाटा आपके टिप्स के ऊपर होगा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी राइटिंग के अंदर। और मोर ओवर अगर आपको इस तरह का कोई टॉपिक स्पीकिंग में भी आ जाता है, अगर आपकी टिप्स लाइन आपने की पॉइंट्स अपने बनाए हुए होंगे तो आपको राइटिंग के और स्पीकिंग के अंदर भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इस तरह के आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके स्पीकिंग के अंदर भी आ सकते हैं। सो प्लीज़ प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, पॉपुलेशन, एंटरटेनमेंट, द सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। जो भी आजकल ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में आप ज़रूर एक बार की पॉइंट्स बना के रखें ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए। सो दीज आर द प्रेडिक्शन ऑफ योर 16th November 2019 IELTS exam. So please prepare, do hard work, and if you need my help please write me down in the comment section. And thank you for watching this video, and share this video with your friend as much as you can, and subscribe this channel also. And thank you very much for watching this video, and please share this video with your friends and subscribe this channel also. And thank you very much, and have a nice day, and best of luck for your IELTS score high band and your future also. Thank you. Bye.